Hi everyone and welcome to 5 Paisa. मैं हूं कुशाल भागी and today we have Mr. Raj Mehta joining us on the show. Raj is a debt fund manager at Parag Parekh Financial Advisory Services. Career शुरू की थी as an intern with PPFAS Mutual Fund in 2012 और तब से he's moved swiftly up the ranks and today वो core fund management team का एक बड़ा important हिस्सा है. So let's welcome him on board to talk more about the mutual fund landscape in India and also how PPFAS's approach has been shaping up to adapt to the ever-evolving markets and investor behavior. Raj Mehta, welcome to the show. Thank you so much for having me, Kushal, here, and thank you so much, 5paisa team, for having me. Great. Raj, तो शुरू करते हैं. Now, आपने तो you've been in the markets and you've been with PPF since over a decade, right? तो पिछली एक डेकेड में इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी इवॉल्व हुई है. इसमें आपकी क्या राय है, particularly when it comes to investor behavior and investor awareness? Definitely. So, if we look at the industry AUM, लगभग मई 2014 में we had crossed 10 lakh crores, and after that, every 3 odd years, we added another 10 lakh crores in AUM. Whereas now we are at about almost 65 to 70 lakh crores. So that's a huge jump in the AUM that we have seen. AUM is just one of the numbers, but अगर number of investors की बात करें, so that has gone up a lot. So we had about 8.5 lakh crore folios in 2020 around the COVID time. Whereas अभी अगर देखेंगे तो around 23-24 crore folios है. So that's a huge jump in the number of folios. On an average, if you look at the AMFI numbers, we have added about 23-24 lakh kind of folios per month. So that's a very, very good number. And जो behavior में changes देखे हैं खास करके investors में वो बहुत ही अच्छा है because जो SIPs के through investors जो आए हैं last 7-8 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखे बिकॉज वॉलेटिलिटी की वजह से उनको SIP से काफ़ी फ़ायदा हुआ है एंड जो इक्विटी मार्केट्स में जो रन देखा है उसकी वजह से रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं. लास्ट 1-2 महीने में थोड़े रिटर्न्स डाउन हुए रहेंगे बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं ये सब इन्वेस्टर्स के लिए. तो आई थिंक जो बिहेवियर में चेंजेस देखने मिले वो काफ़ी अच्छा है. एंड वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत यंग है तो उसके वजह से वर्कफोर्स में जो नए लोग ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से SIP के जो फ्लोज है वो बढ़ते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर. सो आगे जाके भी आई सी दिस नंबर ओनली इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर. Okay, yes, that's a very interesting times ahead Indian mutual fund industry के लिए. Raj, PPFs तो माने जाते हैं for their actively managed schemes, right? But दुनिया भर में and in India as well, passive investing has also been growing a lot. So what do you think about this whole active versus passive debate? अगले 5-10 साल में how is it going to play out? Sure. So globally, अगर देखें तो passives have taken over a lot of AUM from the actives because actives have not been able to outperform the benchmarks to a large extent. बट अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है और खासकर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में. लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ा आउट परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो गया है. लार्ज कैप फंड्स की अगर परफॉर्मेंस देखें कंपेयर टू बेंचमार्क्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो ऐसे कुछ खास नहीं रहे हैं कंपेयर टू बेंचमार्क्स. But if we look at mid and small cap funds, flexi cap funds, they have been still able to outperform the benchmark by a large extent, and I still see that over the next 5-10 years also there is space for actives to grow in India. We are still a long way away from a time where passives will take over a large part of the AUM of the Indian mutual fund industry. The main reason being that there is a large number of stocks that are listed. So if you look at BSE numbers, there are around 5,500-6,000 companies that are listed, and ये number आगे जाके भी बढ़ने ही वाला है. तो उसमें जो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस है उसमें स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो बहुत ही ब्रॉड इंडेक्स है. तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लेस देन 30,000 करोड़ AUM में लेस देन 30,000 करोड़ मार्केट कैप में जो भी कंपनी आती है सब स्मॉल कैप बोली जाती है. तो उसमें अराउंड 4-4,500 कंपनी है.
तो बहुत ही वास्ट स्पेस है, उसमें अगर एक्टिवली मैनेज करें, सिलेक्टिवली अगर क्वालिटी कंपनीज में निवेश करें तो अभी भी आउट परफॉर्म करना पॉसिबल है उसमें। तो आप बोल रहे हो देयर इज प्लेस फॉर एक्टिव एंड पैसिव स्कीम्स बोथ इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो टुडे? Yeah, so large caps maybe that can be played through passives, but mid, small, as well as flexi kind of categories can be played through active funds. Fair enough, that makes sense. तो चलो एसआईपी के बारे में थोड़ी बात करती है। यू नो राज, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एसआईपी फ्लोज हैव डबल्ड इन द लास्ट 3 years एंड ये बड़ी अच्छी खबर है, राइट? बट recently we're also seeing elevated stoppage ratios. मैं अपने व्यूअर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब क्या है। दिस इज अ रेशियो दैट सितंबर में वाज अराउंड 60%, इट बिकेम 82% इन दिसंबर ऑफ 24 एंड अभी जनवरी में इट हिट 109%. 109% SIP stoppage ratio का मतलब ये है that for every 100 new SIPs that were registered, 109 बंद भी हुए हैं. तो ऑब्वियसली इससे साफ ज़ाहिर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नर्वस भी हैं, और ऐसे में इन्वेस्टर्स कैसे अपने लॉन्ग टर्म प्लान से कमिटेड रह सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी? आप थोड़े इस पे गाइडेंस दे सकते हैं? श्योर। सो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ने का 2-3 कारण हो सकता है। एक तो ये है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इसलिए निवेश किया रहता है कि उनको कोई गोल की तरफ पहुँचना रहता है, और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाता है तो एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्ट करना चालू किया कोई गाड़ी लेने के लिए जो 5 साल बाद आपको लेना है, वो 5 साल तक आपने एसआईपी कंटिन्यू रखा और जैसे ही आपने गाड़ी बाय कर लिया वो एसआईपी बंद कर दिया। तो ऐसे इसकी वजह से भी काफ़ी सारे एसआईपी स्टॉप होती है। दूसरा कारण ये भी है कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल रहते हैं, जब रिटर्न्स नीचे आते हैं, तब थोड़े निवेशक परेशान हो जाते हैं कि लास्ट 2-3 साल में अगर मुझे रिटर्न नहीं मिला है, पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिले हैं या एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं एंड एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। वो बिल्कुल ही गलत समय है एसआईपी स्टॉप करने के लिए। इनफैक्ट वो एकदम करेक्ट टाइम है जब आप एसआईपीज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी एसआईपी रिटर्न्स बढ़ाने में ही मदद करती है। एसआईपी का मेन जो एडवांटेज है वही है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो भी आप निवेश कर रहे हो, नीचे जाता है तो भी निवेश कर रहे हो, एंड जो एवरेज आपका जो एनएवी है, एवरेज जो कॉस्ट प्राइस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रैशनलाइज हो जाता है। तो आई थिंक वो इन्वेस्टर बिहेवियर को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है एसआईपी, एंड इनफैक्ट ऐसे volatile times में you should increase SIPs rather than stopping SIPs unless you have reached your goals, and that's why you are stopping your SIPs. आसान नहीं होता है बोलने के लिए। इट्स वेरी इजी टू कंटिन्यू एसआईपी एंड इंक्रीज योर एसआईपी, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव इट इजंट दैट इजी, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मतलब करना ही पड़ेगा। देयर इज नो पॉइंट स्टॉपिंग योर एसआईपीज नाउ। बट राज, एक बात बताओ, फ्रॉम ए इन्वेस्टर साइड इट्स वेरी हार्ड टू कंटिन्यू विद देयर एसआईपीज और टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम्स, राइट? फंड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, हाउ इज इट फॉर योल, फॉर एग्जांपल एट पीपीएफएस, have you all also tweaked your portfolio construction processes? Have you all pivoted? Is there something different that you all are doing during these volatile times? And agar yes, what is it that you all have done and how has the market responded? Is it as expected or not as expected? श्योर। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में हम बॉटम्स अप बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बाय बॉटम्स अप आई मीन कि हर एक कंपनी को इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रैक करते हैं, एंड अगर बिजनेस अच्छा लगता है, मैनेजमेंट अच्छा लगता है, वैल्यूएशंस आर गुड, देन ओनली वी गो एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो, एंड अगर कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है मार्केट में तो हम कैश में भी रहते हैं। तो जब Yeah. मार्केट्स बुल मार्केट्स होते हैं तब कैश में भी हम रहना पसंद करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा रहता है हमारा, और ड्रॉडाउन्स कम रहते हैं जब मार्केट्स करेक्ट होती है। तो लास्ट 1 ईयर से हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 20% कैश है। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें भी काफी सारा हमने लार्ज कैप टुवर्ड्स मूव किया है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो गए थे। उसके वजह से थोड़ा पोर्टफोलियो टिल्ट किया है टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। एंड अगेन दिस इज ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस। ऐसा नहीं है कि हमको ट्रैक करना है कि लार्ज कैप में इतना परसेंट रखना है या स्मॉल कैप में इतना परसेंट रखना है, बट ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस आल्सो मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज डिडंट मेक सेंस एट दोस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। तो
कैश ऑब्वियसली काम आया है लास्ट 2-3 महीने में, जब करेक्शन हुआ है, ड्रॉडाउन्स कम रहे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया। अब या आप लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स रिटर्न्स हमारे फंड के देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो and this is not the first time that we have taken the cash call. We have taken the cash calls at COVID time. We have taken the cash calls in 2018 when the mid and small cap rally peaked. So we have taken these calls over a period of time, and that has played out for us. So जो म्यूचुअल फंड पार्लेंस में डाउनसाइड प्रोटेक्शन रेशियो बोलते हैं, so that is very good for our funds and across time horizons, longer term time horizons, I would say. And we are happy to underperform over a shorter period of time as long as we are able to outperform over a longer period of time on a risk adjusted basis. हाँ, आप लोग काफी consistent रहे in terms of taking these cash calls. That's something I can vouch for as well. But आप लोग still 20% cash पे बैठे हुए हैं, or have you all started to deploy a little bit, given that काफी correction आया है, especially in the mid and small cap space from its highs? नहीं, डेफिनेटली करेक्शन आया है, बट अभी भी इफ यू लुक एट द ओवरऑल वैल्यूएशंस ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस, इट्स स्टिल at a elevated level compared to historical valuation. So it's not that after this correction the companies have become attractive in terms of valuations. They are still at an elevated level, but we keep evaluating companies on an individual basis, and जैसे ही attractive opportunity मिलेगी हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो इट्स नॉट कि ये मार्केट लेवल पे हम कैश इन्वेस्ट कर देंगे, इट्स टोटली ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस। अगर कल कोई कंपनी अच्छी लगती है तो हैप्पी टू डिप्लॉय 5% ऑफ द कैश दैट वी हैव इन दैट कंपनी। Sure, makes sense. I'm going to ask you a little bit about PPFAS's investing philosophy, but उसके पहले just another question for you. Mutual fund penetration काफी बढ़ गया है, right? छोटे शहरों में भी, rural areas में भी, people want to do SIPs, they are doing mutual funds. In markets में, first of all, have you seen an uptick for PPFAS funds from smaller cities also? And if so, किस टाइप के funds investors prefer करते हैं? Are they going in for pure equity funds, for flexi cap funds, multi cap funds, or are they investing in ELSS or debt funds? You want to give us some insight into this particular topic? नहीं, डेफिनेटली। सो लास्ट 5-6 साल में काफी इन्फ्लोज देखे हैं जो B30 सिटीज बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में, विच इज बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज। उधर से काफी इन्फ्लोज आए हैं, नॉट ओनली फॉर अस बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि हमने ब्रांचेस ओपन किए काफी B30 सिटीज में। दूसरा कारण ये भी है कि जब 2015 टू 22 का पीरियड था जहाँ पे रियल एस्टेट अच्छा नहीं कर रहा था, रिटर्न्स उधर अच्छे नहीं आ रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए थे, तो लोगों को एफडी के रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, तो उसकी वजह से काफी लोग इक्विटीज में निवेश करना चालू कर दिए थे वो टाइम पीरियड में। तो वो भी एक कारण है। और तीसरा कारण ये भी है कि एम्फी ने काफी नॉलेज शेयरिंग किया है, काफी एडवर्टाइजमेंट किया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स आर द राइट वे टू इन्वेस्ट एंड काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट है। सेबी बहुत ही कड़ी निगाहें रखते हैं हमारे ऊपर, सब प्लेयर्स के ऊपर। एंड इफ यू लुक एट अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, म्यूचुअल फंड्स आर मच safer compared to them. So I think all of these have played out together, and that has helped in spreading knowledge in these B30 cities, B30 towns as it is called. And I think this will only increase going forward as well. Yeah, absolutely. I think so as well. Okay. Raj, let's talk a little bit about PPFAS now, right? As a fund house, आप value investing के बारे में तो मशहूर है ही है, right? But one of the other things जो आप लोग करते हैं, which is very different from other mutual funds and AMCs, is you'll offer a very limited number of equity schemes as well. So in one sense, is it right to say कि आप काफी all in हो on this value style of investing, right? My question is, how relevant do you think this approach remains, not just in today's time, but going forward as well? And अगर आप कुछ presentation share करना चाहते हैं to talk a little bit about PPFAS's, investing style, your investing philosophy, then maybe you want to put it up on the screen and take 10 minutes and
and discuss Sure, that? sure. I'll put it up on the screen. Just before that, one thing. So, as you said, we have a very very limited product basket. So, Yeah. हमारा कहना हमेशा से यही रहा है कि हम तभी स्कीम लॉन्च करेंगे जब हम खुद के पैसे डालना चाहेंगे वो प्रोडक्ट में। तो इसलिए बहुत ही कम प्रोडक्ट्स है। इन्वेस्टर्स को कम कंफ्यूज करना चाहते हैं नए नए प्रोडक्ट्स नहीं लाके। एंड इससे ये भी होता है कि इन्वेस्टर क्लियर रहता है कि अगर एक ही स्कीम में फंड मैनेजर सब कुछ कर सकता है तो नए फंड में लाने की क्या जरूरत है। तो जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है एंड ईएलएसएस टैक्स सेवर है, देयर आर टू pure equity funds that are there, and then there are hybrids. So I'll just touch upon that when I go through the presentation. I'll just share the presentation now, and I'll go Please. through some of the slides, and then we can take it forward. Sounds good. So I'll just go through the brief history of PPFAS and our founder. So late Shri Parag Parekh is the founder of PPFAS, and he was a very multifaceted personality. So he was a very well-known stockbroker in his initial days, then turned into an investor, and he was also a very well-known author. So he has written two books. One is Value Investing and Behavioral Finance, and second is Stocks to Riches. So both these books were taken very well in the markets when he wrote them, and they are still read by quite a lot of people. So he was a very multifaceted personality in that sense. And a lot of people know PPFAS only after 2013 when we launched our mutual fund operations. But actually, it's a 45-year-old company. We started off in 1979 as a stockbroker. In 92, when the foreigners were allowed to come to India, we were amongst the first ones to have research reports printed on a typewriter and give it to them, have differentiated research. And 96 was when we thought that by being a stockbroker, you're actually incentivizing people to trade more so that you can earn more. So that's when we thought that we need to make a shift here in terms of business by launching our own PMS at that point in time. And we were amongst the first ones to launch our PMS at that time. In 96, we launched our PMS, and in 2012 was when we got our mutual fund license. So the primary reason for moving to a mutual fund from PMS was that mutual fund is much more tax efficient product. Within a scheme, you can do a lot of things in a tax efficient way, and at the same time, you can reach out to retail audience. So the minimum ticket size in PMS had increased from 5 lakhs to 25 lakhs in 2008, and then again to 50 lakhs later on. So we thought that to reach out to a wider audience, mutual fund was a much better product. And also one other reason was that in PMS we could not invest abroad. So जब म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, हमने सोचा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हैं जिसमें इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हेन वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जो था पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। उसमें हमने बोला कि हम 65% इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, 35% फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे टैक्स एफिशिएंट वे में यू कैन इन्वेस्ट अब्रॉड एज वेल। Then in 2018, we launched the second scheme, which was Parag Parikh Liquid Fund after a good 5-year period. Then we launched the ELSS Tax Saver Fund in 2019. जब investors ने बोला कि हमें ATC में benefits चाहिए, तब हमने ELSS Tax Saver Fund लाया। 2021 was when we launched our conservative hybrid fund, which was more of a debt-oriented hybrid fund from our side. So वो लॉन्च किया। 23 में we launched the arbitrage fund, and 24 we launched a dynamic asset allocation fund. So I'll just go through the philosophy first, and then we'll go to the product basket that we have. So our core belief has always been the law of the farm. So Parekh used to say this a lot, that you cannot sow something today and reap tomorrow. A seed has to go through the various season before it turns into a fully grown tree. So is the case with investing. So the whole point here is that investing में भी आपको काफी सारे market cycles के through जाना पड़ता है before you actually start reaping returns from your investment. So similar like a seed, you also have to bear through the volatility, and then only it will reap rewards for you over a longer period of time. Uh,
three, four main principles on which we work. One is that we don't overpay for businesses. So, paying a reasonable price for the businesses that we own. We are happy to earn moderate returns by taking lower risk or by not taking excessive risk. Capital preservation and downside protection is very, very important for us. And just keep repeating this over a longer period of time, and you will be able to earn better risk adjusted returns over a longer period of time. So this is what we follow in terms of philosophy. Uh, our logo, which is the tortoise, it's very well known for its wisdom, knowledge, longevity, as well as timelessness, and it represents what we do at PPFAS. So the tortoise is very symbolic of what we represent at PPFAS. Uh, Also, one differentiating factor for us compared to what the other players do in the mutual fund industry is that we look at the mutual fund business as a fiduciary responsibility. So first is we don't look at it as a business; we look at it as a profession. So we do whatever is right for the end investor. We don't launch flavor of the month scheme. So today, if say infra sector is doing well, we launch an infra scheme. Tomorrow, if a real estate sector is doing well, we launch a real estate scheme. We don't do that. So we have very, very limited product offerings that allows us not to have survivorship bias, not to promote schemes that have done well, and all those kind of mis-selling points go away. So that helps in terms of fiduciary responsibility. And also we have very open channels of communication. So हमारा म्यूचुअल फंड एक ही म्यूचुअल फंड है जो यूनिट होल्डर मीटिंग्स रखता है। साल में एक बार हम सब इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, जिसको भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आ सकते हैं। भले 1000 रुपए डालो कि 1000 करोड़ डाले हो, वो इन्वेस्टर वो मीटिंग में आके कोई भी सवाल कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आके पूछ सकता है। So we have very open channels of communication, and this way we are quite different from what other players are in the industry. Coming to the investment approach, so there are five major points here. So one and the most important point is that we like to partner with minority shareholder friendly managements. इसका मतलब ये है कि प्रमोटर क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर अच्छा नहीं है, प्रमोटर चोर है, तो आपको एंड में रिटर्न्स बनाने नहीं देगा। तो इसलिए प्रमोटर क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर प्रमोटर वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, तो हम आगे जाके उसमें उसको इवैल्यूएट नहीं करते बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो once it passes the promoter quality check, then only we look at the business characteristics, whether it makes sense to invest in them or not, whether it has competitive advantage or not. Uh, Third point is that we prefer cash generating businesses, low debt businesses. कोविड जैसे टाइम पे ये बिजनेसेस भी सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उसमें डेट नहीं रहता। अगर डेट रहेगा तो वो डेट रीपे नहीं कर पाएंगे या पूरे प्रॉफिट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। तो वी prefer companies which are monopolies, duopolies, oligopolies, cash generating businesses, companies with higher return on capital. These kind of companies form a part of our universe. And lastly, we don't pay any price for investing in these businesses. So we are very, very conscious of the price or the valuation that we pay for any business. जो buy at any price kind of philosophy है वो हमारे पास नहीं है। हम बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस है in that sense, and we try to be conservative for the valuations that we pay for the businesses. और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे फंड हाउस का ये भी है कि स्किन इन द गेम है हमारा। तो हमारे जो प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉइज है, एचओडीज है, सब ने हमारी स्कीम्स में पैसे डाले हैं। एंड एवरी मंथ हम लोग ये वेबसाइट पे डिस्क्लोज करते हैं। तो अभी लास्ट 3 साल से सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया है, बट हम ये 2013 से करते आ रहे हैं। एंड एवरी मंथ आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कि कौन से एम्प्लॉइज ने ऐड किए हैं, कौन से एम्प्लॉइज ने रिडीम किए, कितने यूनिट्स कौन से एम्प्लॉय के पास है। तो दिस इज a transparent way of communicating what we do at PPFAS. Now coming to the offerings, as I said, we have 3 offerings on the debt and the hybrid side. One is a liquid fund, which is very easy to explain. It's an alternative to FD or a short-term cash management kind of product. Then we have 2 hybrids.
एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें लगभग 25% के ऊपर इक्विटीज में नहीं जा सकते हैं, तो उसमें हम 15% जितना इक्विटीज रखते हैं, 10% रीट्स इन्वेस्ट रखते हैं, बाकी का 75% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। टैक्सेशन में 2 साल पहले 3 साल पहले जब चेंज आया था जिसमें मोर देन 35% अगर इक्विटीज हो तो वो टैक्सेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो टाइम पे। तो उसकी वजह से हमें लगा कि ये प्रोडक्ट अभी इतना काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया था, जिसमें वी कुड डू अ लॉट ऑफ दिस। सो हियर वी हैव about 35-40% in equities, 15-20% is मेनली इनटू कोर इक्विटीज, बाकी का आर्बिट्राज रहता है, एंड जो बाकी का पोर्शन है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं। तो अगेन डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो हमारा है, इट्स मोर ऑफ अ डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड रादर देन इक्विटी ओरिएंटेड या बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो ये कैटेगरी में है। Now coming to the equity schemes that we have, one is the FlexiCap scheme which we talked about. So it's a scheme where we can do everything within that. We can invest across market caps, across geographies. We can stay in cash if required. We can do arbitrage if required. So it's kind of a Swiss Army knife where the fund manager has the flexibility to do anything as per the market conditions dictate. Second is the ELSS tax saver fund. Here it's almost a replica of the FlexiCap fund's Indian portfolio. So दो या तीन ही डिफरेंशिएटर है ELSS के कंपेयर टू फ्लेक्सीकैप फंड। एक ये है कि इसमें लॉक इन रहता है, क्योंकि इसमें एटीसी बेनिफिट्स मिलते हैं तो 3 साल का लॉक इन रहता है। दूसरा डिफरेंशिएटर ये है कि इसमें फॉरेन स्टॉक्स में निवेश नहीं कर सकते हैं हम, एंड तीसरा ये है कि डेरिवेटिव्स में नहीं कर सकते हैं। तो जो आर्बिट्राज पोजीशंस है या कवर्ड कॉल ऑप्शंस जो हम फ्लेक्सीकैप फंड में कर सकते हैं, वो ELSS टैक्स सेवर फंड में नहीं कर सकते हैं। और चौथा डिफरेंशिएटर ये भी है कि ELSS के जो रेगुलेशंस है उसमें कहा गया है कि 80% मिनिमम इक्विटीज में निवेश करना जरूरी है, तो उसमें कैश लेवल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 20%, वेराज फ्लेक्सी कैप में हम उससे ज्यादा भी कैश में जा सकते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंशिएटर्स है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस इफ यू सी इट्स मोर और लेस मिरर्स द फ्लेक्सी कैप फंड्स पोर्टफोलियो, एंड इफ यू सी द रिटर्न्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स मोर और लेस सिमिलर टू द फ्लेक्सी कैप फंड। And lastly, we have the sixth product, which is the arbitrage fund. Again, it's very easy to understand, so I'll not go through that. So, yeah, that was what I wanted to cover about the products and the investment philosophy. If you have any questions, you can take it. Yeah, Raj, if you can go just one slide back, I want to talk about आपके दो fund in particular. एक तो with the recent changes in debt funds, right, with regard to taxation. How do you see your conservative hybrid fund and your dynamic asset allocation fund? Because even your dynamic asset allocation fund, जैसे आपने कहा था, industry से थोड़ा हटके है, right? The positioning of that fund. But currently going forward with the changes in debt taxation, आप थोड़ा update देना चाहते हो in terms of how these two funds can be perceived by the market? श्योर। सो जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मिनिमम 75% इन डेट सिक्योरिटीज रखना कंपलसरी है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इक्विटीज में बियॉन्ड 25% जा नहीं सकते। तो दिस इज टैक्स्ड लाइक अ नॉर्मल डेट फंड और लिक्विड फंड, जिसमें इन्वेस्टर के टैक्स स्लैब पे टैक्स किया जाता है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। सो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लोअर टैक्स स्लैब्स में है या जीरो टैक्स भरते हैं या सीनियर सिटीजन है जिनको उनके रिटायरमेंट के लिए SWPs करनी है, उनके लिए अच्छा है। जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, जैसे कहा आपने कि थोड़ा हटके है कंपेयर टू द कैटेगरी, सो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड्स आर क्लब्ड इन वन कैटेगरी। So most of the funds in this category are 65% plus in equities, which gives equity kind of taxation. Whereas हमने ऐसे प्लेस किया है कि equities will remain between 35% and 65% most of the times. So you get the taxation benefit over there. So after 2 years, you will be taxed at 12.5%. And within that 35% equities, also 50% of it more on a longer term basis, on an average, would be arbitrage positions, whereas the core equity exposure would be lower in the range of 10 to 20%.
So what that does is it lowers the volatility of the returns, and at the same time it gives debt plus kind of a return. So it's a debt oriented hybrid fund instead of a aggressive hybrid or a balanced advantage fund. So also, is there any change now? So for example, recent budget may, that 12 lakhs figure, Yeah. everybody has been talking about that up to 12 lakhs, you up tax nahi ban, you won't need to pay tax. Do these two funds get more of a fillip in that sense? Uh, so yes and no, both. Dynamic asset allocation fund, yes. So those who want a regular income from these, in fact, both. So dynamic asset allocation Hmm. fund and conservative hybrid. If people want regular income, then they can do SWPs from this and gain regular income without paying any tax up to 12 lakhs. Uh, One other change which has happened is that because of the taxable limit being increased, maybe more and more people will move into new regime, and that's why the ELSS fund may not find that much of a favor. But at the Hmm. same time, what we tell our investors is that treat the ELSS tax saver fund as an pure equity fund or a pure Indian equity fund. So इनफैक्ट जो लॉकिंग पीरियड है 3 इयर्स का वो हेल्प करता है काफी इन्वेस्टर्स को सो Yeah. that helps investors to stay invested for a longer period of time and they don't redeem before 3 years, so that's actually a good thing. And if you don't want any exposure to international stocks, then probably ELSS fund that we have is a good alternative that you can have in your portfolio. You're very correct. And before you close this presentation, Raj, can you go back to the first slide Sure. where you showed the couple of books that Sri Parag Parekh had written? For all the viewers who are watching this particular webinar, अगर आपने ये किताबें पढ़ी नहीं है, I would suggest pick them up, read it. मैंने पढ़ी है, such an easy read, and you learn so much. And in fact, Raj, after listening to you and putting this back out there, I think I should go back and read them again, because Yes. sometimes, when you read it again, you get a different perspective of this as well, right? No, So do definitely in do these that. tough times, it even makes more sense to reread them. Absolutely. Well, we've come to the end of this particular show. Raj Mehta, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद for being part of the show, and come again next time as well. Thank you so much, Right? Kushal, for having me. Thank you. Great. And all to all the viewers, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Stay tuned to 5 Paisa. Thank you.